Good evening and welcome back. You're watching Newsbreak. Now the thing is, let's talk about Gujarat, where the state government is actually considering very actively a proposal that has been brought to the notice of the state government on seeking parents' consent if a girl decides to marry someone of her choice. Yes, the statement sounds bizarre, but there is a proposal which is under consideration. It has not been approved yet, but it is under consideration. Here is what the Chief Minister of Gujarat had to say. He says, the State Health Minister told me to examine cases of girls eloping. Health Minister asking the Chief Minister to examine cases of girls eloping. I really wonder how that is something to do with health. Nevertheless, the Chief Minister says, a study should be carried out to ensure parental consent in love marriages. If Constitution is not a hindrance, we'll carry out that study. See, he's non-committal, but he's not saying no. He's saying if Constitution is not a hindrance, we'll get to what the Constitution says, and I really hope that the Chief Minister knows the Constitution. This announcement is 4 months after similar demand was raised in the Assembly by BJP MLA Fateh Singh Chauhan. So this is a demand which has been raised in the Assembly by a BJP MLA. Now Bhupendra Patel's comments were there at a Patidar event in Mehsana. Patel himself is a Patidar leader. He comes from the Patidar community. He is echoing the Patidar community's call to enforce parental consent. He has not given an in-principle approval, but he seems to suggest that if the Constitution allows it, then he may think of conducting a study. Now, why is this statement, playing to the gallery statement of the Chief Minister, significant and important? Because Patidar community is a very dominant, politically influential community in Gujarat. So if they demand something, almost like a Khap Panchayat, it cannot be ignored in Gujarat. For instance, in the state of Haryana, you've got to take the Jats seriously. In Western UP, you've got to take the opinion of the Jats seriously. Similarly, in Gujarat, the opinion of the Patidar community is taken very seriously. Now, there seems to be some sort of a cross-party support for a proposal as ridiculous as this, that a woman, a girl, has to take consent of her parents to decide who she wants to marry or who she wants to elope with or love. First of all, that condition or need for eloping must not arise. But parental consent for marriage? Congress MLA Imran Khedawala has supported this plan for parental consent in love marriages. According to reports, he says the issue concerns two families. Parents raise their kids, so their consent should be mandatory. I have seen many cases of girls eloping and then regretting it. If government brings the bill, will support it in the Assembly, as the matter has been raised in the Assembly. Now, what does this proposal signify? Let's put that on the screen right now. The proposal requires parental consent only for women, not for men. So let's just tell you this, the Patidar community, which is originally proposing this, is proposing this only for women. There is no comment on men. Men can go and marry outside or against the will of their parents without seeking any consent. But according to the Patidar community, the women cannot do so. So according to this community and this proposal, love marriages is equal to being viewed with suspicion. It is equal to women straying from family's control. There is also talk of making them bedakhal, removing them from the ancestral property, and so on and so forth. There is anxiety around intercaste and inter-religion marriages, and that issue the community wants in this proposal to be addressed through a legislation. Is this a further curb on women's agency, is the question that we ask. Now, all important point. What did the Chief Minister say? He said, if the Constitution allows. Well, let's quickly, though everybody should know this by now, but let's quickly turn to the Constitution. Article 21 of the Indian Constitution guarantees
inalienable right to marry a person of one's choice. The role of the society in deciding the choice of spouse is non-existent. Right to marriage is an element of right to life. Marriageable age is 21 for men and 18 for women. So if you meet this criteria, this taking consent of the family is not in the constitution, it's unconstitutional. And this matter also came up, a similar case came up in the Supreme Court. I would like to draw your attention to the HADIYA case of 2017 and 2018, where a case by HADIYA's father alleging love jihad was filed. A Hindu girl converted to Islam to marry husband. The father moved the Kerala High Court to trace the daughter. The family alleged brainwashing. HADIYA said she married of her own volition. The High Court annulled HADIYA's marriage in 2017 and handed over to her parents. The High Court said unmarried daughters and their custody lies with parents until properly married. HADIYA's husband then moved the Supreme Court, and in 2018, this entire matter also became all about love jihad and the NIA being involved. But in 2018, the Supreme Court restored HADIYA's marriage. And in their observation and their judgment, the Supreme Court said the High Court is wrong in letting parental love override rights of two adults. The Supreme Court also said HADIYA married of her own free will. There is precedence, there is a Supreme Court judgment, and of course there is the Constitution. Then why exactly do we have a situation which we are going to debate at this moment, Gujarat and the Pyaar ka permission Raj? Let's put this to a discussion, shall we? Professor Geeta Bhatt, political analyst, Sanjay Hegde, senior advocate of the Supreme Court, Abha Singh, advocate and social activist, and Neerav Patel of the Sardar Patel group is also with us. Neerav ji, I want to begin with you first. Neerav ji, आपको क्यों लगता है कि यहां परमिशन की जरूरत है मां बाप की? अगर कोई एडल्ट है, कोई 18 साल की एक महिला है, 21 साल का पुरुष है, कानूनी रूप से संविधान यह हक देता है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं. यहां पर आपको मम्मी पापा की परमिशन की बात क्यों उठानी पड़ रही है? तो देखिए, हमें जो लव मैरिज है उनसे कोई भी निष्पत्ति नहीं है. लव मैरिज भले ही हो, हम उनके खिलाफ नहीं है, पर लव मैरिज के नाम पर जो लड़कियों को गुमराह करने वाले असामाजिक तत्व है, उनके सामने हमको दिक्कत है. जो लव मैरिज कर रहे हैं, जो लड़का लड़की से शादी कर रहा है, वो लड़की की सारी जिम्मेदारी उठा सकता है पूरी जिंदगी. भले ही वो लव मैरिज करे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, पर जो लव मैरिज के नाम पर बहला कर फुसला कर उसकी रेप कॉलेज, जब लड़कियां आज, अब मान लो कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आप बता रहे, हम पहले बता दें कि सरदार पटेल सेवा दल का नाम से हमारे गुजरात के अंदर ट्रस्ट चलता है, जिसके अंदर हम सामाजिक कार्य करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ऐसे आज की तारीख में डेली 3 से 4 केस आ जाते हैं कि लड़की भाग गई है, बिना माँ बाप की परमिशन लिए उस शादी की थी. सामने वाला पात्र, एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर लड़की हो या लड़का हो, वो शादी करेगा और सामने वाला पात्र अच्छा होगा, वेल एजुकेटेड और सब कुछ उसमें होगा, तो पेरेंट्स क्यों मना करेंगे उसको? पेरेंट्स कभी मना नहीं करेंगे. अगर भगवान के बाद अपने बच्चों का, मैं आपसे नीरज जी एक सवाल पूछना चाहता हूं. देखिए, ये परिवार का अंदरूनी मामला, अब कानून की बात करते हैं. चलिए ये मान सकते हैं कि सुनिए मेरी बात, अगर आप मुझे इजाजत दें, कानून की बात ये कहती है कि 21 साल से ऊपर का पुरुष और 18 साल से ऊपर की महिला, उनको इजाजत है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकें. ये कानून में कहीं नहीं लिखा है कि मां बाप का परमिशन होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, साइन होना चाहिए. उनका आशीर्वाद लेना ये हमारे संस्कार हैं. लेकिन अगर वो खिलाफ हो जाएं तो कानून ये अधिकार देता है कि आप शादी कर सकते हैं. आप जो प्रपोज कर रहे हैं नीरव जी, महिला को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए कि कहीं वो गलत शादी ना कर ले, गुमराह ना हो जाए, उसके लिए मां बाप का कंसेंट हो. आपको नहीं लगता है कि इस चीज का दुरुपयोग भी हो सकता है? और दूसरी चीज, ये कौन, अगर एक एडल्ट महिला अपने आप तय नहीं कर सकती अपना अच्छा बुरा, कानून को लगता है वो कर सकती है, आप कह रहे हैं वो नहीं कर सकती. कानून माने या आपको?
नहीं, बिल्कुल आप कानून को मानिए, हम ऐसा नहीं करें। हमने आपको पहले ही बता दिया कि 18 साल की लड़कियों, 18 साल मतलब आप समझते हो बेटियों की उम्र में उसको सामाजिक कोई भी नॉलेज नहीं। 18 साल का मतलब वो लड़की 11वीं 12वीं में पढ़ती होगी, क्या उसको मैरिज का क्या नॉलेज होगा? कल आप बोलो, कल तीसरी चौथी कक्षा वाला भी बच्चा आके बोलेगा आई लव यू, कोई किसी भी लड़की के कह देगा चलो मेरी शादी करा दो, तो करा देंगे हम लोग। तो फिर सही मायने में आपका आंदोलन ये होना चाहिए था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तहत आप महिला की भी शादी की उम्र 21 कर दें कि वो पढ़ लिख जाए, ग्रेजुएट हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए, अपना अच्छा बुरा समझ ले। या तो आप ऐसी बात करते, लेकिन आपका प्रपोजल या पटीदार समुदाय की तरफ से प्रपोजल ये आ रहा है कि नहीं, वो लव मैरिज करने के लिए आप मां पिता का सिग्नेचर लेकर के आइए। अच्छा, ये कंडीशन आपने पुरुषों के लिए नहीं रखी है, सिर्फ महिलाओं के लिए। नहीं, पुरुषों के लिए भी है। पेरेंट्स का सिग्नेचर बोला है, जिसमें लड़के के पेरेंट्स भी करेंगे, लड़की की पेरेंट्स भी करेंगे। ऐसा कहाँ बोला है हमने केवल लड़की की पेरेंट्स भी करें? तो भाई फिर ये सिग्नेचर की बात कहां से? संविधान में तो नीरव जी, संविधान में माँ बाप के सिग्नेचर का कहीं भी प्रावधान नहीं है। आभा सिंह एंड संजय हेगड़े आर ऑल्सो विद मी। मिस आभा सिंह, you heard what Mr. Patel had to say. He said this is to protect the daughters. Now, how does one look at this? Because this is a very, I understand, for all you know, I'm not blaming everyone. Some women do fall in love and then later regret. But does that mean that you propose something which is extrajudicial or extra constitutional? Like this. I think the Chief Minister should know very well that India is a free and democratic country and there is a constitution which works here. In fact, as early as 2006 in Lata Singh versus State of UP, Supreme Court had made it very clear that India is a free and democratic country, and once a person is a major, he or she can marry whosoever she likes. In fact, the court went ahead and said if the parents do not approve of an intercaste or a interreligious marriage, maximum they can cut off social relations. But they said they cannot threat or instigate violence. In fact, as late as in Shakti Vahini case, you know what Supreme Court said? Supreme Court said if parents are troubling or instigating violence against their children, or then 504 or 506 IPC, FIR can be registered. Whosoever does that. And the very clear, Supreme Court has very clearly said that right to marriage is a fundamental right. So they cannot tamper with it. I am appalled that we have a chief minister like that. We have politicians who think that they can break the law. Of course, you are very right, Sanket, when you say that if you want to make it from 18 to 21, go to the parliament, increase the age of marriage. But if it is 18, if the Prohibition of Child Marriage Act 2022 clearly says the right to marry is 18, then I think a girl who's 18 has full rights to marry who she wants. Yeah, and bringing in a legislation or talking about it or even suggesting that we look into this proposal, on the face of it looks bizarre. And Professor Geeta Bhatt, you see this then stems from the very powerful community from which the Chief Minister comes from and its political importance and clout in a state like Gujarat. Do you think that this is akin to a sort of a Khap Panchayat diktat of Haryana? Because the community is so powerful politically that you may want to engage with them, even if the idea is as bizarre as this. Well, probably in your introduction, you had shown that from parties from the whole political spectrum actually coming out and in a way concerned whether it is even we're just going to fix your audio and come back. My apologies because we can't hear you properly. It's an important point that you're making. So let me just fix this audio and we'll come back. Sanjay Hegde, your response. First of all, the legal position. I mean, it's very easy for anyone to know that judgment after judgment and also the position of the Constitution is very, very clear. But, I mean, what would you like to say to those who are toying with the idea of considering a proposal like this? Well, the first thing I'd like to say is that your children do not belong to you. They are not your property. You cannot dictate their lives. They are individuals. They have their own rights, and their own right to life includes the right to a partner of their choice. You may approve of the marriage, you may disapprove of the marriage. If you disapprove of the marriage, you want to cut away
cut out relationships, you want to disinherit them, by all means go ahead. But it cannot be that a marriage is invalid in the absence of parental consent. That is absolutely unconstitutional. And you spoke of the HADIYA case. And in the HADIYA case, the Supreme Court said that the High Court, which had annulled the marriage, treaded on an area which must be out of bounds for a constitutional court. The views of the High Court have encroached into a private space reserved for men and women, in which neither law nor the judges can intrude. The Supreme Court has said that marriage is something so personal, so intrinsic to your right to life, that that no law can be made, that the judges cannot intrude. So all this khap panchayat business, whether it is in Haryana or whether it is the Patidars elsewhere or whether it is any other community which seeks to regulate its daughters' marriages or say that marriages without parental consent are invalid, are simply unconstitutional. यस नीरव पटेल जी, मैं वापस आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, सरदार पटेल ग्रुप आपकी संस्था का नाम है। आप तो जानते ही हैं कि सरदार पटेल खुद कितने प्रोग्रेसिव थे विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। सरदार हैपन टू बी द फर्स्ट टू पिच फॉर रिमूविंग सेक्सुअल डिस्क्वालिफिकेशन इन द डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल एक्ट। By this act, women were barred from contesting elections as per Section 15(1)(c). A resolution was passed in this regard in the Ahmedabad Municipal General Board on the 13th of February 1913. Sardar Patel also argued that keeping women out of the elected body was equivalent to eliminating the representation of half of the urban population. In 1926, this act was abolished. तो एक तरफ तो सरदार पटेल जो हैं, जिनके नाम पर आपकी संस्था है, उनके विचार कितने प्रोग्रेसिव, कितने अच्छे महिलाओं के सम्मान के लिए, और यहां आप जो हैं वो आपको नहीं लगता है कि बहुत ही एक रिग्रेसिव एक ऐसी चीज करने को कह रहे हैं जो कि हक मारेगा, हक दबाएगा महिलाओं का? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर किसी का हक मानने की बात ही नहीं है। हमने पहले ही कह दिया, जो लव मैरिज हो रहे उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लव मैरिज के नाम पर जो लड़कियों को फंसा जा रहा है, ये आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे नीरव जी? इसका फर्क आप कैसे करेंगे? कानून मसला, फर्ज कीजिए आप ये कानून बना भी दें, इसका फर्क आप कैसे करेंगे कि लव फॉर रियल एंड लव फॉर छलावा? कानून कैसे ले सकते हैं? ये तो गलत है ना, हमने कह दिया तो इसका मतलब संविधान है ही नहीं, आप संविधान है। अरे हमको कहा कहना, उसके माँ बाप कहना, उसी के लिए तो हम पेरेंट्स की नहीं, माँ बाप देखिए, माँ बाप संविधान से ऊपर नहीं है। एक बार बच्चा 18 साल का लड़की और 21 साल का लड़का हो गया तो माँ बाप का भी कोई रोल नहीं रह जाता, क्योंकि उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा है कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 14 में उनको प्रोटेक्शन है। एक बार वो मेजर हो गए, वो किसी से भी शादी कर सकते हैं। तो ये कहना हमने कह दिया, ना पटीदार कह सकते हैं, ना हरियाणा की खाप कह सकती है, इन सबको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है। तो ये आपकी सोच ही गलत है। अच्छा कि नीरव आप जी, जो है कहेंगे कि हम डिसाइड करेंगे। नीरव जी, मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि देखिए, अगर एक माँ बाप अपने बच्चे का अच्छा हित जाते हैं और मान लेते हैं आप जो कह रहे हैं कि वो गलत इंसान के प्यार में फंस गई और धोखे में हो गई, तो उसके बाद क्या माँ बाप प्यार करना छोड़ देंगे? अगर ऐसी महिला जो है वो वापस आती है अपने घर, तो क्या उसका हाथ नहीं थामेंगे कि उसके लिए भी कानूनी प्रावधान चाहिए माँ बापों को? कई लोग थामते हैं, जो आपने बात की ना उसके अंदर कई माँ बाप थामते, कई माँ बाप नहीं थामते। क्योंकि आपको अगर गुजरात का बात मालूम नहीं हो तो मैं बता दूं, गुजरात के अंदर वो लोग, कई लोग थामते, कई लोग नहीं थामते उनकी लड़की का हाथ। तो ये तो और भी बुरी बात है। एक तो आप प्रताड़ित करें और उसके बाद कानूनी रूप से आप ये हक देते हैं माँ बाप को कि वो लड़की जो है और प्रताड़ित हो, यानी कि वो अपने हक से कानूनी रूप से जो वो शादी करना चाहती है और प्रेम विवाह करना चाहती है वो ना कर सके। कानूनी रूप से वो शादी करे, उसके हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर शादी के नाम पर उसके जो महिला कर फुसला कर फंसाया जाता है, उससे हमें दिक्कत है। इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये आप कैसे पता करेंगे कि कहां बहलाया फुसलाया जा रहा है और कहां जेन्युइन लव मैरिज है? वो तो दिखेगा ना सामने वाला बंदा। ये तो मुझे ये बात, इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज लड़की कर सकती है, लड़का लड़की कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कह दिया है कि इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज हो सकती है और वो करेंगे, क्योंकि नो, आई सी, माय पॉइंट इज, इफ
if by some political pressure this law or this consideration were to go through, imagine what great injustice it will do to the women in Gujarat. Sanjay Hegde and Abha Singh, what is your opinion? Mr. Hegde. No. Flies in the face of anything related to freedom. Absolutely. To make a woman's right to marry contingent on parental approval is to step back into time, and nowhere in the world was a marriage invalidated because the parents objected. At best, parents could disinherit their children, parents could cut it off. But you can't say that a marriage will be invalid. Oh, you did not take prior parental consent. That is something which is not only not unconstitutional, but it goes Mr. Hegde, if this proposal does come up, if this does come up for discussion, and let's just say, I mean, we are dealing in a hypothetical situation here, if this is passed as a law, legally speaking, it would be struck down for the asking as unconstitutional and manifestly arbitrary. Today you say that, you cannot marry without parental consent. Let's stretch the principle. Next time you will say that you will not get married without permission of your college principal. Can you... It just goes on to the ridiculous extent. तो नीरव जी को भी हंसी आ रही है इस बात पे। नीरव जी, आपको नहीं लगता है कि एक ऐसी बहुत ही विचित्र सी स्थिति आप मांग कर रहे हैं इसकी? ये माँ बापों को तो बात पसंद आएगी, लेकिन आप जरा सोचिए कि समुदाय के हित में बात करने के लिए हम एक तो ऐसे ही सैकड़ों विकृतियां हैं हमारे समाज में, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर महिला एक कास्ट की है और अगर पुरुष किसी और कास्ट का है, माँ बाप कभी अप्रूवल देंगे ही नहीं। और किसी भी एक ऐसे प्रेम विवाह को ये बोल दिया जाएगा कि ये गलत विवाह है। माँ बाप अप्रूवल देंगे ही। माँ बाप को सामने वाला बंदे से अगर वो असामाजिक तत्व गुंडा मवाली नहीं है तो माँ बाप अप्रूवल देंगे ही। बसाने वाले नीरव जी, मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए, अप्रूवल नहीं चाहिए। Tradition say that you need their ashirwad. The law says that you do not need their approval. Simple. I think the sooner we understand this, the better. Thank you very much, Neerav Patel, Abha Singh, as well as Sanjay Hegde for joining us. And our apologies because Professor Geeta Bhatt had come, but there was some problem with her audio and she could not join us. That's a wrap in this edition of Newsbreak. News and updates continue on the other side. Stay with us.